Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining. So guys, our today's agenda is to revise the investment appraisal. So I'm dividing investment appraisal into two parts. One is the simple investment appraisal, and the other is risk and uncertainty and specific decisions. Is there any issue of? Is there any voice issue? Okay, perfect. Okay, Ji guys, let's start. So I'm dividing investment appraisal into two parts. First part is the simple investment appraisal, or we can say that project appraisal, in which we will revise to calculate NRV, payback, IRR, or discounted payback. Second part is in which we will revise the risk and uncertainty and specific decisions. So the first part belongs to F9 and ICAP MFA. The second part belongs to only F9. So when we will start the F9 part, when we will start the second part, I will request all the ICAP students to leave the session. So the most important part is that we will be revising the project appraisal together. हमने project appraisal इकट्ठे revise करना है, but when we start revising the risk uncertainty and specific decision, that will only belongs to the ACCA part. Okay. So let's revise the project appraisal. So in project appraisal, you guys must know the time value of money concept. Obviously, everybody knows that what is time value of money concept. I'm not revising that. You should know the discounting and compounding. So you guys know that what is discounting. Discounting kya hoti hai, what is compounding. You guys know it very well. So the present value is equal to future value into 1 plus r raised to power minus n. Everybody knows that how to calculate the present value. Okay. Then if we move further, you guys should know the inflation impact. In inflation, you should know the 4 points. Let me revise all those. Number 1 point, real cost of capital. Number 2 point, money or nominal cost of capital. Money or nominal cost of capital. Real cost of capital means without inflation. इसमें कोई inflation शामिल नहीं है. Without inflation. Nominal cost of capital means with inflation. And if question is silent,
examiner has written only the word cost of sale, nothing is mentioned, कुछ mention नहीं है, तो वो हमेशा होगा nominal cost of capital. Nominal cost of capital. So we can say with confidence कि दुनिया में कहीं भी एग्जाम आ जाए, whether it belongs to ACCA, ICAP, ICAW, whenever the question is silent, it will be nominal cost of capital. If you read the newspaper and if interest rate is given, if some cost of capital is given, if any rate, percentage return is given, that will be nominal rate. Okay, nominal rate will be given. Nominal rate means with inflation, and real cost of capital means without inflation. So how to calculate real when nominal is given? How to calculate nominal when real is given? Using the Fisher effect, this formula. This formula. So if money rate is given, inflation is given, you can calculate the real rate. If real rate is given, inflation is given, you can calculate the money rate. So these 2 points are important in inflation. Third point, third and fourth point is real cash flows. Real cash flows mean without inflation cash flows. Without inflation cash flows. Money cash flows mean with inflation, money or nominal. With inflation. So which data will be given in the exam? Normally, R means real rate. R means real rate. This R means real rate. Without inflation. If real rate is given, if inflation is given, you can calculate the money rate. Okay. Real cash flows mean without inflation. Money cash flows mean with inflation. So what will happen in exam? In exam, first scenario can be, it will specifically mention all cash flows are at current price level. All cash flows are at current price level. Year zero price level. Today's price level. So first scenario is current price level, year zero price level, today's price level. That means all cash flows are current cash flows. Add inflation from year one. From year one onwards. You will have to add the inflation in year one as well as from year one onwards. Year one में भी inflation शामिल करनी है, आगे भी करनी. So that will be the first scenario. All cash flows are at current price level, zero price level, today's price level. So that means no inflation has been added. You have to add the inflation from year one onwards. That's the first scenario. Second scenario. All cash flows are at year one price level. All cash flows are at year one price level. Year one price level. That means only 1 year inflation has been added. 1 year inflation has already been added. You will be adding inflation from year 2 onwards. आपने year 2 से inflation add करनी. Add inflation
from year 2 onwards. ईयर 2 से इन्फ्लेशन ऐड करनी, ईयर 1 से ऐड नहीं करनी इन्फ्लेशन. So if all cash flows are at year 1 price level, that means 1 year inflation has already been included. You will have to add the inflation from year 2 onwards. Okay, third scenario. And what is that? Cash flows will be given. Project information is given. Project information is given. Nothing is mentioned about inflation. Nothing is mentioned about inflation. Data is selling price and cost data is normally of year 1. अच्छा, ये सिर्फ MFA में होगा, ICAP में होगा बस. In ACCA, examiner will specifically mention whether it is a current year cash flow or year 1 year cash flow. Normally in ICAP or in MFA, if nothing is mentioned, तो वो year 1 का data होता है. वो scenario इस तरह का देता है. Okay. So if it is written current cash flows, you have to add inflation from year 1 onwards. If it is written cash flows are at year 1, you have to add the inflation from year 2 onwards. Especially in MFA and ICAP, if nothing is mentioned, that means cash flows belongs to normally year 1. And you have to add the inflation from year 2 onwards. Add inflation from year 2 onwards. Okay, one more scenario, that is if different inflation rates are given. If different inflation rates are given. Like current price data is given. 1,000, 2,000, 3,000. Inflation rates are 5%, 7%, 10%. So how to add the inflation? Solution. Year 1 is simple, 1,000 into 1.05. ये तो बड़ा आसान है. For year 2, first you will multiply with 1.05. Then you will multiply with 1.07. 1,000 into 1.05. Then you will multiply 2,000 into 1.05. Then into 1.07. Or what about the 3,000? 3,000 into 1.05 into 1.07 into 1.0 into 1.10 into 1.10. That's how you will solve the multi-inflation rates. Okay. All clear, guys? यहाँ तक perfect. Let's move forward. Tax depreciation.
और कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस कह लें, टैक्स डेप्रिसिएशन कह लें, इट हैज टू नेम्स, टैक्स डेप्रिसिएशन और कैपिटल अलाउंस। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, एक्चुअली टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, फुल नेम इज टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन। तो दो मेथड आते हैं इसमें, वन इज स्ट्रेट लाइन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सेकंड इज initial investment minus scrap value into percentage of depreciation. So it's very simple to calculate the straight line depreciation. Very simple. What about the reducing balance method? Reducing balance method. Reducing balance method is, let's solve it with the help of an example. Investment 2000, percentage of reducing balance, let's suppose 25%, life 5 year, scrap value, let's say 400. Okay, let's say tax is 30%. So how to calculate it? So I will calculate according to both ACCA and ICAP. By the way, approaches are different, but answer is same. So year tax depreciation, year 1, 2, 3, 4, 5, 2000 into 25%. So answer is 500. So calculate second year depreciation. There are two methods. Number one is calculate the carrying value, net book value, your written down value. 2000 minus 500 into 25%, 375. Then 1500 minus 375 into 25% and so on. Or there is another way, that is last year depreciation into 75%. So it will be 375. Next year will be 281. $211. And in last year, all the remaining will be claimed as depreciation. So what we normally do in ACCA, what we normally do, हम क्या करते हैं मैं अब आपको वो बता देता हूँ. हम कैलकुलेट करते हैं कॉलम रिटर्न डाउन वैल्यू का और फिर हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन. 2000 500 आ गया, 1500 into 25%, 375, 1125 into 25% के 281 आ गया,
844 into 211 आ गया 633. So last year carrying value is 633. 633 minus scrap value. So it's a kind of a loss, 233. Yeah, 233 loss आ गया. So you will calculate tax saving on these tax depreciation. आपको इसके ऊपर tax saving आया. Why loss? Because 633 का आइटम तुमने 400 का बेच दिया. You are selling an item having a carrying value 633 at 400. That's why it's a loss. Acha. ICAP, in ICAP we have a slightly different approach, but ACCA guys can follow that approach as well. वो क्या है जी? हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन. We normally avoid this column. हम इसको कॉलम को निकाल देते हैं. Okay, one student has asked why we are not deducting scrap value at first. Shami, this is another method in reducing balance method. We always deduct the scrap value at the end. In scrap value, we normally deduct the in straight line method, we normally deduct the scrap value at inception, at start, in front. Okay, ये जो ICAP वाला मेथड है इसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं 2000 into 25%, 500. फिर लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन पकड़नी है. We will apply last year depreciation into 75%, because when you deduct the 25%, remaining value will be 75%. So now take the 75% of last depreciation, 375. Take the 75% of last depreciation, that will be 281. Take the 75% of last depreciation, that will be 211. Take the 75% of the last depreciation, that will be 211 into 0.75, 158. And then calculate the carrying value. Carrying value is 2000. And how much you have deducted? You have deducted 25, 25, 25, 25. You have deducted 25% depreciation 5 times. So multiply it with 0.75 raised to power 5. So what will be the carrying value, guys? 475. And you are selling the asset scrap value by 400. What is the loss? Loss is 75. So if you add these two, 158 depreciation and 75 loss, what is the total claimable expense in last year is 233. So 233 का expense आप claim कर सकते हैं in the last year. So this is kind of a disposal loss. So what is the difference in these two methods? In ACCA, we normally do not calculate depreciation in the last year. We simply calculate loss in the last year or gain in the last year. In ICAP method, we normally calculate depreciation separately in the last year, and then we will calculate the gain and loss. But by the way, both are acceptable in both bodies. दोनों acceptable हैं दोनों जगह. ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो दोनों जगह दोनों मेथड एक्सेप्टेबल. Okay. Okay, next is NPV performer. मैं आपको दो परफॉर्मर बताऊंगा. आई विल टेल यू टू परफॉर्मर्स. नंबर वन इज, by the way, both performers are acceptable in both bodies. You will write sales
variable cost, incremental fixed cost, minus tax depreciation. माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन ऊपर से माइनस कर दे, माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन एंड माइनस अगर लास्ट ईयर में लॉस आया तो गेन आया तो ऐड हो जाएगा. प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स, then add back the tax depreciation or add back the disposal loss as well. गेन माइनस हो जाएगा. माइनस वर्किंग कैपिटल चेंज, माइनस इन्वेस्टमेंट, माइनस स्क्रैप वैल्यू, सॉरी प्लस स्क्रैप वैल्यू. Whenever there is a scrap value, we will always consider that depreciable asset is disposed of. Yes. Net cash flows, discounting factor, present value, NPV. This is number one performer. Number two performer is yes, last year's scrap value will be added. Number two performer is sales लेंगे, variable cost लेंगे, minus incremental fixed cost, profit, tax. Instead of deducting the depreciation and then adding back, simply calculate tax saving on depreciation. Tax saving on depreciation. Simply calculate tax saving on depreciation. Minus working capital change, minus investment, minus scrap value. Sorry, plus scrap value, Net cash flows, discount factor, present value. So this is number two performer. So आप क्या करोगे, आप टैक्स डेप्रिसिएशन के बाद इधर एक टैक्स सेविंग भी कैलकुलेट कर लोगे. टैक्स सेविंग in MFA we usually follow the number one performer. In ACCA we normally follow the number two performer. But by the way, in ACCA examiner normally follows both of the performers. So both of the performers are acceptable in both ways. What is the difference? What is the difference between these two performers? Number one performer is depreciation calculate karo, deduct the depreciation from above, calculate tax, then add back the depreciation. So what is the second performer? Calculate depreciation, then calculate tax saving on depreciation, and simply add tax saving on depreciation after calculating the tax. That's the difference. But you should know the both performers. Knowledge तो आना चाहिए ना आपको दोनों performers पर कैसे करते हैं. Okay. Any question, guys?
टैक्स सेविंग लास्ट ईयर में डिपेंड करता है। अगर डिस्पोजल, इफ देयर इज अ डिस्पोजल लॉस, तो फिर तो टैक्स सेविंग आएगी। इफ देयर इज अ डिस्पोजल गेन, तो फिर वो टैक्स पेएबल आ जाएगा। टैक्स नॉर्मली टैक्स सेविंग ही आती है। ओके ओके, नेक्स्ट इज आईआरआर। आईआरआर फॉर्मूला इज ईयर्स में तो टैक्स सेविंग नहीं होगी। 1 2 3 4 होगी, क्यों नहीं होगी भाई? डेप्रिसिएशन हर साल आती नहीं है। टैक्स सेविंग टैक्स सेविंग टैक्स सेविंग टैक्स सेविंग आएगी। हर साल डेप्शन आती है ना। डिस्पोजल गेन को के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं, टैक्स पेएबल आएगा। अगर डिस्पोजल गेन आ गया तो टैक्स पेएबल आ जाएगा। ठीक है, ओके। So shall I move? IRR. Calculate two NPVs at two different rates. Calculate IRR using formula. Formula is lower rate plus lower rate NPV divided by lower rate NPV minus high rate NPV into high rate minus lower rate. And whenever IRR is greater than cost of capital, we should accept the project. Okay. Any question, guys? अच्छा जी, पता क्या है? In ACCA, you do not need to all these steps. आपने कमांड देनी है एक सिंपल, that is equal to IRR, no matter if both rates are positive, IRR will be correct. If both rates are negative, IRR will be super correct. एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, इन ACCA वाले स्टूडेंट्स देख लें प्लीज। इन ACCA you simply put is equal, you have to simply put is equal to sign, then write IRR and select cells. आपको करके दिखाता हूं बस। That's it. IRR खुद ब खुद निकल आएगा। आपको ये करना ही नहीं है इतना कुछ। Excel will calculate. बाकी पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, वो सिंपली बहुत सिंपल है, वो वैसे हम देख लेते हैं अभी।
Okay, let me open the question, guys. Give me a few minutes. Give me 1 minute, please. Wait कर लें. क्वेश्चन आंसर मैं एंड पे देता हूँ. अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है. सो लेट्स कम एट दिस क्वेश्चन. दानिश वेट करो, कराया तुम. Okay जी, for the proposed investment in the new motorcycle, calculate the following: NPV, IRR, payback period, return on capital employed. So question is, company manufactures motorcycles and is considering an investment in a new high performance model. The market for high performance motorcycle is very competitive and the company director want to recover the cost of investment in the model quickly. ये दोनों के लिए भाई, क्वेश्चन दोनों के लिए एक जैसे क्वेश्चन आते हैं. Don't worry about that. Company manufacture motorcycle and is considering an investment in a new high performance model. Market for high performance motorcycle is very competitive. Company director want to recover the cost of investment in the model quickly before it is made obsolete by more advanced model at the end of 4 years. Directors also wish to show shareholders that the investment will be profitable. The directors have therefore set a target payback period of 2 years. Payback period 2 साल का target है, and target return on capital employed is 20%. Return on capital employed is not part of ICAP. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं. Directors have also asked the finance director to provide the NPV and IRR calculation for the investment. They plan to consider the result of these calculations if the investment fulfills the target for payback and return on capital employed. Company has prepared the following forecasts of production and sales of the new model. So you will sell 25,000 motorcycle in year 1, 45,000 in year 2, 40,000 in year 3, and 20,000 in year 4. Company finance director has prepared the following information relating to the investment proposal. Initial investment is 220 million. Residual value at the end of 4th year, 30 million. Selling price year one.
20,000. Expected selling price inflation 6%. Variable cost in year 1, 14,000. Expected variable cost inflation is 6%. Incremental fixed cost year 1 price terms 120 million. Expected fixed cost inflation is 10%. Nominal discount rate is 14%. And ignore the tax. If there is no tax, there is no depreciation. So the basic question बहुत आसान हो गया. तो A part करते हैं. Let's do the A part. So सबसे पहले क्या करना है, आपने years लिख लेना है. 0, 1, 2, 3, 4. के बाद वैसे मैं आपको प्रेफरेबली कहूंगा राइट द मोटरसाइकिल्स. नंबर ऑफ यूनिट्स 25,000, 45,000, 40,000, 20,000. Then round off $1 million. Now calculate the sales. Sale is selling price into number of units. Selling price is 20,000 into 25,000. 20,000 into number of units. अब इसका नुकसान क्या होगा? आंसर आपका बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी. मुझे तो मिलियन राउंड ऑफ चाहिए ना. So what I will do, I will divide it with 1 million. 500 आ गया. So what I will do in the next year, I will inflate the data in the next year by 6%. 6%. Please calculate and confirm me these figures, guys. Please calculate and confirm me the figures. नहीं, आंसर ये ठीक नहीं है. Units into selling price into inflation divided by 1 million. अब ठीक आएगा. Now please confirm, guys. Now please confirm. Why I didn't add inflation in year 1? Because it is already given year 1 price terms. लिखा हुआ है. It is written clearly that selling price is already inflated for 1 year. Year 1 price terms. Guys, please confirm. जो मैनुअली कर रहे हैं प्लीज कंफर्म करें. How to calculate it? Units into selling price और फिर 000 राउंड ऑफ कर दें. Units into selling price. सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन आएगी. इन सेकेंड ईयर यू विल इन्फ्लेट 1.06 raised to power 1 divided by 1 million. Please confirm. Answer should be this. Everyone. $898.88 आ रहा है ईयर 3 में.
476 आ रहा है। MFA स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म। ईयर 3 में आपने इन्फ्लेशन भी ऐड करनी है, 2 साल की। 2 साल की इन्फ्लेशन ऐड होगी। इन ईयर 3 यू विल ऐड 2 years इन्फ्लेशन। Okay, now deduct the variable cost. See, in a similar way. In a similar way. Number of units into variable cost, that is 14,000. And take the 1 million round off. 350. Number of units into 14,000. Into 1.06. ये रेस्ट पावर 1 सेल के साथ लिंक कर दें प्लीज, पिछले साल के साथ लिंक कर दें। 667.80 आ जाए। ओके, please calculate the variable costs. Those who are calculating manually, please confirm me the figure. यही है। Now write the fixed cost. Fixed cost in year 1 is 120, and it will inflate with 10% every year. कर लेते हैं अगर ऐसा है। 1.1 fixed cost. Profit is 500 minus 350 minus 120. Please calculate the profit. टैक्स है नहीं, डेप्रिसिएशन है नहीं, इग्नोर करें। वर्किंग कैपिटल चेंज है नहीं, इन्वेस्टमेंट लिखें। स्क्रैप वैल्यू गिवन है। Fixed cost given है। Fixed cost in year 1 is 120 and it will inflate with 10% every year. 120 को इन्फ्लेट किया 132, फिर 132 को इन्फ्लेट किया 145, then inflated to 159. Scrap value is given. Scrap value is नहीं given. $30 million is given. 30 million इधर ही लिख लें। Net cash loss. Net cash loss. Sale minus variable cost. Sorry.
ये नेट कैश फ्लोज आ गए. Okay, discount these cash flows at 14%. 14%. 14% पर डिस्काउंट कर ले. ओके जी. डिस्काउंट करें, एनपीवी कैलकुलेट करें. बाय द वे ऑन एक्सेल इट इज वेरी सिंपल. एनपीवी विल बी, राइट, एनपीवी bracket start, select all the cells from year 1 onwards. लाइव हो गया. एनपीवी bracket start 14% first of all. $16.79. Yeah, 16.79 is the answer. जो मैनुअल कर रहे हैं उनको सारा कुछ करना पड़ेगा. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. ये बाय द वे एमएफए स्टूडेंट्स नहीं ये फॉर्मूला लगा सकते, मैं पहले बता रहा हूँ. आपको सारा कुछ खुद करना है, मैनुअली लिखकर करना है. सॉरी टू से, लेकिन क्या करें. राइट, एनपीवी bracket start, select 14% discount rate, comma, select all cells from year 1 onwards, bracket close, and plus the investment appraisal. Why I am adding the investment appraisal, initial investment? Because it is a negative sign. अगर initial investment का plus sign होगा तो आप minus कर देना. 16.79. Please, I am requesting all those students जो कि manually कर रहे हैं, please answer match कर दें. Please tell me answer is right. Perfect. Now calculate the IRR. So IRR using Excel is very simple. Otherwise, if you do it manually, so what we have to do? We will calculate NPV at like 20% again. और फिर फॉर्मूले में पुट करके इसको निकालेंगे आंसर. But here it is very simple. IRR is right. IRR bracket start. Select all cash flows from year 0 till end. This is the IRR. That's it. That's how you will have to do the IRR. लेकिन जो मैनुअली कर रहे हैं, please solve it and tell me whether IRR is correct or not.
Please, guys. It is correct. Okay, perfect. Let's calculate the payback. Payback. Remember, you will consider these cash flows for payback period. These cash flows. First of all, copy the years. Years copy कर लें. Years लिख लें. Then write the net cash flows. Then write the cumulative cash flows. Cumulative cash flows. In first year, you are not receiving anything. Still, you need to recover 220. In second year, you are receiving 30 million. So add 30 million into 220. In third year, you are receiving 154. So add 154 into 190. In year 3, you need 124. Add this 124 into 35. So it is very clear that in 2 years' time, you haven't recovered the funds. In third year, you need 35.8, but you get 124. So 35.8 divided by 124.46 into 12. Into 12. So answer is 2 years and 3.5 months. 3 months approximately. 3 months. Payback. Please confirm and tell me whether answer is correct or not. First column will be years, second column will be net cash flows, third column will be cumulative cash flows. And target payback was 2 years, na? We should not accept the project because we are receiving cash flows after the 2 years. We are recovering cash flows after the 2 years. ठीक है जी, ओके यहाँ तक. Any question, guys? कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं. हाँ, एनपीवी आईआरआर के केस में तो एक्सेप्ट हो रहा है ना. हमने तो पेबैक की पीरियड में से बताना है. Sorry, please guys wait. Let me open a question. वेट कीजिएगा.
अच्छा जी, ये क्वेश्चन करते हैं। मैं करवाता हूँ, इसके बाद करवाता हूँ। दिस इज फ्रॉम अनदर बॉडी, दिस इज आई कैप क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा लर्निंग होगी आपकी इसमें। कहते हैं बाय यूजिंग द एनपीवी मेथड determine the discount rate at which launching of the gladiator would be financially feasible. Using the NPV method, determine the discount rate at which the launching of the gladiator would be financially feasible. By the way, पूछा गया है? Anyone? Read the requirement again and tell me what examiner is asking. Anyone? IRR पूछा हुआ है. Examiner is asking about the IRR. Determining the discount rate at which the launching would be financially feasible. वो कौन सा रेट है जिसके ऊपर अगर हम प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो फाइनेंशियली फिजिबल होगा? वो कौन सा रिटर्न है एक्चुअली, वेयर प्रेजेंट वैल्यू विल बी पॉजिटिव ना? तो उसने आईआरआर का आपसे पूछा. एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द आईआरआर. ओके, द क्वेश्चन इज the IU is engaged in production and sales of various consumer products. Management is in the process of launching a new product, Gladiator. You have been provided the following information in this regard. IU has outsourced the due diligence of Gladiator at the cost of 250,000, which is payable shortly. So by the way, ये 250,000 is relevant or not? Please tell me. $250,000 is relevant or not? IU has, अब आप वर्डिंग पढ़े. IU has outsourced the due diligence of Gladiator. Outsourced, has outsourced. तो उसने काम, उसने कॉस्ट इनकर कर ली है या नहीं? पैसे दिए या ना दिए को छोड़ें, कॉस्ट इनकर हो चुकी है या नहीं? Cost is already incurred or not? Please tell me. Cost is already incurred. So it is not a relevant cost. So it is not relevant. It is not relevant. Okay. ये इसको कहते हैं कमिटेड कॉस्ट. कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा कमिटेड कॉस्ट. This cost has already been committed. Now whether you do the project or not, ये कॉस्ट इनकर होनी ही होनी है. Sunk cost है, अब नहीं करना आप. Specialized machinery costing 25 million would be needed for the production of Gladiator. Initial investment आ गई. This is initial investment. Machine would be financed by a bank loan that would carry interest rate of 12%. उसके ऊपर 12% का आपका बैंक लोन आपने लिया हुआ जी. Machine would be expected to produce 10,000 units in the first year. However, the production would reduce by 10% and 15% in the second year and third year respectively. At the end of third year, an overhauling would be carried out at a cost of 2.5 million. This would result in a continuation of the third year production in the fourth and fifth year. So मुझे बताएं, year 1, year 2, year 3, year 4, and year 5 units. In year 1, units is 10,000. What will be the units in year 2, guys? What will be the units in year 2? ये statement पढ़े. Please read this statement and tell me what would be the units in year 2. Production would reduce by 10% and 15%. किसका 15%? 10,000 का या 9,000?
So what will be the units in year 3? What will be the units in year 3? Please calculate. 7650. ये 15% ये कम हो जाएगा. 7650. Please calculate. Okay. So all are agreed on 7650. Any issue, any problem? नहीं ना? Okay, in year 3 पे आओ. Year 3. At the end of third year, पूरा पढ़ लो आगे. At the end of third year, an overhauling would be carried out at a cost of 2.5 million. This would result in continuation of the third year production in fourth and fifth year. So in third year, units will remain same in fourth year and fifth year. लेकिन कैसे आपने खर्चा किया है 2.5 million का. फिर तो by the way, 2.5 million is a capital expenditure or revenue expenditure? Capital expenditure or revenue expenditure? अकाउंटिंग पढ़ी हुई आप सबने. ओवरऑलिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ओवरऑलिंग इज ऑलवेज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. ये रिपेयर कुछ और होता है. ओवरऑलिंग कुछ और होता है. रिपेयर होता है छोटा मोटा रिपेयर करना. ओवरऑलिंग होता है जो मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है. तो इसने प्रोडक्शन देखो, अगर ये ना लिखा होता है तो नेक्स्ट ईयर में यूनिट शुड बी लोअर देन 7650. बट बिकॉज ऑफ दिस 2.5 million यूनिट्स विल रिमेन सेम. टेक्निकली तो आपकी यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी बढ़ी है ना. वो बढ़ी है मेरे भाई. अगर ये ना होता तो कम नहीं हो जानी थी. आप ये समझो. Selling price and cost of goods sold of Gladiator would be 1600 and 750. 1600 and 750. Fixed operating costs of producing Gladiator would be 1 million per annum, whereas variable operating cost would be 100 per unit. Machine would have an estimated useful life of 5 years, after which it would be scrapped for 5 million. Machine and overhauling cost would be subject to machine and overhauling cost. यहां से भी आपको देख के पता चल गया. Would be subject to tax depreciation of 25% on a reducing balance method. Tax rate is 30%. Tax would be payable, refundable in the year in which liability occur. All revenue costs are quoted on today's rate. ये देख लें भाई. So it is current price terms. कौन सी terms हैं guys? Current price terms. Estimated inflation rate is 8%, would be applicable for all revenue and cost. There are no opening or closing inventories of Gladiator in any of the 5 years. ये वैसे भी नहीं दी होती. Opening closing, there is no opening closing inventories. ठीक है, कर लेंगे. It's a doable question. So let's quickly solve it. Years 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 साल थे ना. First of all, write the units. अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ. Guys, please wait.
क्वेश्चन आपके पास आ गया? आ गया भाई. I have sent it. So first of all, calculate units. So in first year it is 10,000. Second year it is 90% of 10,000. Third year it is 85% off. And then it will remain same. 7650. Now calculate sales. You can round off at 000, na? Sales. Units into selling price. So what was the selling price? 1600. अच्छा, आप एक काम करें, यूनिट्स को बल्कि सेलिंग प्राइस को राउंड ऑफ करके लिख लें. 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई विद 1.6. So there are two ways. Either multiply with 1.6, 1600, 000 round off is 1.6, or there is another way, 1600 divided by 1000. So I will rather multiply it with 1.6. And next year units into, sorry, ये year 1 price level था ना, year 0 price level था, inflation भी आएगी, into inflation is 1.08. Guys, please calculate sales of every year and confirm me. ये आ गया. अच्छा, रेज टू पावर भी करना है. Please, those who are calculating manually, please confirm me. Answer is right or not. Guys, please confirm. Sales. Okay. Now calculate the cost. Cost is 750 rupees. Units into 750 means 0.75 into inflation. Please confirm, everyone. कर ले कैलकुलेट कर ले, प्लीज टेक योर टाइम. बाकी सब लोग कैलकुलेट करें, जो कर चुके हैं वो, जो एक्सेल पे कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करें.
So variable operating cost is 100 per unit. ये भी करें 100 per unit. Units into 100, 100 को ट्रिपल ज़ीरो राउंड ऑफ करें 0.1. 1.08 raised to power 1. प्लीज ये भी करें, मैच करें प्लीज. $100 per unit. Fixed cost 1 million. 1 million mean 1,000. वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी कोई, ऑपरेशंस की कोई कॉस्ट होगी. अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए. लुक, company is engaged in the production and sales of various consumer products, including a product Gladiator. You have been provided the following information. So following information is only about the Gladiator. So fixed operating cost of producing Gladiator. Fixed operating cost of producing Gladiator. That means this 1 million is incremental. ये incremental ही है. Okay. अच्छा जी. इसके अलावा देख लें कुछ है. Now calculate depreciation. अच्छा, अब थोड़ा फर्क आएगा. मैं आई एम डूइंग इट in both ways. Let me calculate depreciation in both ways. Don't worry. Return on value is, guys, please start calculating depreciation. Give me 1 minute.
ओके जी। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 25 million and depreciation is 25%. 25 million and 25% ना? Next year WDV is previous year WDV minus tax depreciation. और इसी का 25% ले लें। लास्ट ईयर क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। मैं दोनों दोनों मेथड से कर देता हूं, परेशान ना हो। ये आ जाएगी टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है नॉर्मल। ओवरऑलिंग भी की है आपने। ओवरऑलिंग किस ईयर की है? व्हेन यू हैव डन द ओवरऑलिंग गाइस? थर्ड ईयर। हम एट which cost? 2.5 million थर्ड ईयर। तो डेप्सन तो फोर्थ ईयर पे आएगी ना। 2.5 million। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज क्लियरली रिटन इन द क्वेश्चन। It is clearly written in the question. All revenue and cost are at today's price. All revenues and cost are at today's rate. The estimated inflation is 8% would be applicable for all revenue and cost. So इस 2.5 million में इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। So ओवरऑल कॉस्ट आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2.5 million into 1.08 raised to power 3. So overall cost is 3.14 million. 3.14 million। अच्छा, बाय द वे इसको आप 25 मिलियन कर लेना, 25,000 कर लें, क्योंकि हमने 000 राउंड ऑफ किया हुआ ऊपर। और ये भी 2500 into 1.08 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। इसके ऊपर पहली डेप्रिसिएशन ईयर 4 में आनी 25%। ठीक है। और लास्ट ईयर में ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका? क्लेम हो जाएगा। लॉस ही हो गया ना एक तरह का। डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता भाई। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट विल ओनली बी ऑन कॉस्ट। सो ये आपकी दो डेप्रिसिएशन हो जाएगी, एक ये डेप्रिसिएशन हो गई, एक ये डेप्रिसिएशन होगी। तो दो तरीके हैं। टोटल डेप्रिसिएशन, मैं अभी बताया था, अभी बताया था। ठीक है गाइस, तो पहले मैं कर रहा हूं ये टिपिकल जो हम एसीसी में फॉलो करते हैं वो वाला तरीका। मैं आईकैप वाले तरीके से भी करवा देता हूं, दोनों आप मैच भी कर लेना आपस में। सो व्हाट आई हैव डन, सिंपली मशीन परचेज प्राइस इज 25,000, apply the 25% rate। Return on value is 25,000, depreciation is 6250, return on value is 1875। कैसे कैलकुलेट की? 25,000 minus 6250, take its 25%। फिर ये रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई 25%, रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई 25% आ गया। रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई लास्ट ईयर में, उसमें से आपने स्क्रैप वैल्यू लेस कर देनी है, दैट इज 5,000। सो ईयर 5 टैक्स डेप्रिसिएशन इज 2910। टैक्स डेप्रिसिएशन तो नहीं कह सकते, तरह का लॉस कह सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ ए लॉस 2910। अच्छा जी, ओवरऑलिंग कॉस्ट क्या है? 3149 बाय, सर ये तो 2.5 मिलियन थी। उसने कहा है कि हर आइटम में इन्फ्लेशन आनी, हर आइटम में इन्फ्लेशन आनी। तो मैंने 2.5 मिलियन को इन्फ्लेट कर दिया 3 इयर्स के लिए। ठीक है, हर आइटम में इन्फ्लेशन आनी है।
और इसके ऊपर फर्स्ट डेप्रिसिएशन आ गई ईयर 4 पे, क्योंकि इफ यू हैव इनकर्ड द कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3, फर्स्ट डेप्रिसिएशन विल बी इन ईयर 4, देन ईयर 5। अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक और चीज करेक्शन भी कर लें। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू गाइस? 5000। हर आइटम में अगर इन्फ्लेशन आनी है तो स्क्रैप वैल्यू भी इन्फ्लेट होगी, इंटू 1.08 रेज टू पावर 5। तो दिस शुड बी द स्क्रैप वैल्यू। दिस शुड बी द स्क्रैप वैल्यू। ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, आप इसके ऊपर टैक्स सेविंग ले लें, एट 30%। अच्छा, आई कैप वाले तरीके से देख लें। सबसे पहले ईयर्स टैक्स डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5। क्या करते हैं हम? 25,000 इंटू 25%, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन इंटू 75%। फिर एंड पे क्या होता है? कैरिंग वैल्यू कितनी आती? 25,000 इंटू 0.75 रेज टू पावर 5, और स्क्रैप वैल्यू गेन आ जाता है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखा जाए, लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन और गेन 563 के इक्वल आएगा, तो वो ऊपर वाले के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवरऑलिंग का इधर आ जाए, इधर कर लेते हैं ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग की कॉस्ट कितनी आ गई ईयर 3 के एंड पे? 3149। इसके ऊपर फर्स्ट डेप्रिसिएशन कब आएगी? ईयर 4 पे। ट्वेंटी 25% इंटू 0.75। अब कैरिंग वैल्यू फाइंड कर लें। कैरिंग वैल्यू होगी जी, ये आ गया, माइनस दोनों डेप्सन कर दें। और स्क्रैप वैल्यू इसकी 0 है, मतलब इसके लिहाज से तो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है ना, तो लॉस कितना आ गया? इधर आ जाए टोटल टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई। अब आंसर मैच हो रहा है, आप देख लें ऊपर से। अच्छा, ये कैरिंग वैल्यू वाला ये ना करें, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू विल बी टेकन इन द लास्ट ईयर, वुड नॉट इट बी ऑलरेडी इन प्रेजेंट वैल्यू? नहीं नहीं, प्रेजेंट वैल्यू में नहीं, इसमें इन्फ्लेशन एडेड नहीं है। इट इज क्लियरली रिटन इन द क्वेश्चन दैट inflation has not been added in any revenue or cost. So guys, this is depreciation, cell number E67. So I'm copying it above E67. C67. तो आप अपने अपने तरीके से बेशक कर लें, प्रॉफिट निकाल लें। सेल माइनस कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल डेप्रिसिएशन ये आ गया
सो टैक्स लगेगा 30%। 30%। मैंने नेट कर लिया ना, मैंने नेट कर लिया, आप अपने तरीके से कर लें। आप जो टैक्स सेविंग से करेंगे वो भी करेक्ट है, बिल्कुल। जो टैक्स सेविंग से करना चाहेंगे वो भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी, उसके अलावा, इसके अलावा क्या जी, इज एनीथिंग अबव, एनीथिंग एल्स? इन्वेस्टमेंट -25,000। एंड स्क्रैप वैल्यू वो कितनी थी आपकी? ओवरऑलिंग कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, नेट कैश फ्लोस। नाउ कैलकुलेट द आईआरआर। लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन उसका दो तरीके से कैलकुलेट किया है, देखो ओवरऑलिंग की। दिस इज आईकैप वे। सिंपली कैलकुलेट, दिस इज ओवरऑलिंग कॉस्ट, उसका 25% लिया और उसी का फिर 75% ले लिया, और उसकी स्क्रैप वैल्यू मैंने जीरो ज्यूम करके सॉल्व कर लिया, लॉस आ गया सारा का सारा। इसकी डेप्रिसिएशन को और इसकी डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, इसके गेन और इसके लॉस को नेट कर दिया, तो ये नेट आपका लॉस आ गया। इस लॉस को और लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, लॉस आ रहा है ना, तो लॉस, यू कैन क्लेम टैक्स सेविंग ऑन लॉस, यू कैन क्लेम टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो लॉस और डेप्रिसिएशन ऐड हो सकती है, गेन और डेप्रिसिएशन नेट हो जाएगी आपस में। ओके, प्लीज कैलकुलेट द आईआरआर, प्लीज कैलकुलेट द आईआरआर। Guys, please calculate the IRR. It should be 9.57%. ठीक है, हाँ जी। आईआरआर कैलकुलेट करें, मैंने तो सिखाया हुआ है, दो रेट से डिस्काउंट करें, आंसर निकालें। पहले डिस्काउंटिंग किसी भी रेट से कर लें, लाइक फर्स्ट डिस्काउंटिंग डू एट द 10%, देन सॉल्व द अदर।
Okay. Pink's company is a large company listed on a major stock exchange. In recent years, the board of Pink's has been criticized for weak corporate governance, and two of the company non-executive directors have just resigned. A recent story in the financial media has criticized the performance of the Pink company and claimed that company is failing to satisfy the objective of its key stakeholder. Pink company is appraising on investment project which it hopes will boost its performance. The project will cost $20 million, payable in full at the start of the first year. The project life is expected to be 4 years. Forecast sales, volume, selling price, and variable cost and fixed costs are as follows. Sale is given, selling price, variable cost, fixed cost is given. Selling price and cost information are in current price terms, 5% inflation. Variable cost is 3.5% inflation and fixed cost inflation is 6%. Corporate tax is 26% with the tax liability being settled in the year in which it arises. Company can claim tax allowable depreciation on the full initial investment of 20 million on a 25% basis. On a, the investment project is expected to have a zero residual value. Nominal after-tax cost of capital is 12%, real cost of capital is 8%, general rate of inflation is 3.7%. Okay, let's do the question. Let's do the A part. Part A. So first of all, write the years 0, 1, 2, 3, and 4. Okay. अच्छा एक कर चुके हैं हम लोग, एक सेकंड रुको ना, फिर मैं ऑलरेडी सॉल्व से कर लूं. ये है ना ऑलरेडी सॉल्व. दिस इज ए पार्ट राइट, प्लीज करेक्ट मी. यही है. अच्छा अब पार्ट 2 पे आए. अच्छा ये पार्ट 2 ही है. अच्छा ये देखो ना मैंने किया हुआ है, ये पार्ट ए इधर किया हुआ है, ये पार्ट ए है. पार्ट ए के नेट कैश फ्लोस पकड़ ले, ये वाले नेट कैश फ्लोस इधर लिख लें. 1419, सॉरी ये कौन से कैश फ्लोस है, हाँ ये टैक्सेबल कैश फ्लोस पकड़ ले. जो इन्फ्लेट वाले कैश फ्लोस हैं जिसपे आपने इन्फ्लेशन ऐड की हुई है. सेल्स के ऊपर इन्फ्लेशन ऐड किया, यू हैव एडेड इन्फ्लेशन वेरिएबल कॉस्ट, यू हैव एडेड इन्फ्लेशन फिक्स कॉस्ट, टैक्सेबल कैश फ्लोस ले लें. इन सारे टैक्सेबल कैश फ्लोस में से इन्फ्लेशन निकाल दें. कितनी है? 3.7% जनरल इन्फ्लेशन. कैसे निकाली है जरा देखो. 14149 इंटू 1.037 रेज टू पावर -1, रेज टू पावर -2, रेज टू पावर -3 कर दें. अप्लाई 26% टैक्स. टैक्स सेविंग ऐड कर दें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लें, स्क्रैप वैल्यू अगर हुई तो ले लो, है ही नहीं वैसे इस क्वेश्चन में. नेट कैश फ्लोस कैलकुलेट करें, डिस्काउंट कर लें, बस दैट्स इट. इसमें तो और कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, अब देख लें गलती कहाँ आ रही थी.
नहीं नहीं, उसी को डिफ्लेट कर दें बस। नहीं वैसे आएगा नहीं ना, सेम नहीं आएगा, क्योंकि यू आर इन्फ्लेटिंग द कैश फ्लोज विद 5%, 3.5 and 6%, and you are deflating the cash flows with average rate 3.7। तो उससे आंसर करीब करीब तो आएगा, एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। ठीक है, we have real discount rate if we multiply 300 with 125, 125 is, हाँ नहीं आंसर सेम नहीं आएगा ना। देखो, there is a simple reason, we are inflating sales with 5%, we are inflating cost with 3.5%, we are inflating fixed cost with 6%, and then we calculate the nominal NPV, but we are deflating all of these cash flows by a general inflation 3.7%। So that's why answer is, हाँ करीब करीब आएगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। आपका आंसर बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा होगा इस आंसर से। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, बाकी सब अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। एक मिनट देना मेरा। हाउ टू कैलकुलेट रियल एनपीवी? फर्स्ट मेथड, कैलकुलेट रियल कैश लॉस, discount factor should be real cost of capital, you can calculate the NPV। आप बात कर रहे हो इसकी, you are talking about this method, मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूं, वो ये है, if in a part you have already calculated nominal NPV, you have already calculated NPV using nominal method, simply deflate nominal cash flows with general inflation and discounted with real cost of capital। बस मैं ये सिखा रहा हूं, इस तरह से करना है। ठीक है, क्लियर हुआ अब? जी ये बोले दानिश।
मैंने अनम्यूट कर दिए। और डिस्काउंट करने के लिए -1 करना है ना, रेस्ट बार -1। Calculate the equivalent annual cost of 3-year and 4-year replacement intervals for the beast and advise company which replacement interval to adopt. Company is a construction company. It uses a large earth-moving vehicle called the beast to prepare foundation for building. It needs to decide whether the cheapest replacement interval for the beast is 3-year or 4-year. Company purchases the beast for a manufacturer for 800,000 payable 1 year after delivery. Your resale value will fall by 40% of the purchase price at the end of its first year. Resale value will then reduce by 25% of its previous year resale value for each further year of operation. हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. Yearly maintenance cost is 20,000 at the end of first year, rising by 5%. Maintenance cost must be provided in the year of sale. Yearly fuel cost is 28,000 in the first year, rising by 5,000. If the beast is operated beyond 3 years, it is subject to government safety and carbon emissions. The test would be paid for and would take place at the beginning of the 4th year of operation. Correction of any fault discovered by the test is mandatory. There are 80% chance that the test and the remedial work will cost company 50,000 and 20% chance that it will cost 120,000. Cost of capital is 8%. And you have to solve the question for 3-year and 4-year replacement. 3-year and 4th year. So let's solve first with the 3-year. Part A. Which is 3-year replacement. ट्रिपल जीरो राउंड ऑफ कर लें. Years 0, 1, 2, 3. So first of all, write the purchase cost. Company purchases the beast from manufacturer for 800,000 payable after 1 year. So investment cost is 800 in year 1. Resale value will be fall 40% in the first year, then 25% in the next years. So resale value is first year it will fall 25%. So it will remain 75%. Then it will fall. Sorry, in first year it will fall by 40%. So remaining value will be 60%. Then in next year, year 1, it will be 75%, year 2, 75%, in year 3, 75%. नहीं कितना होगा? सही है, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं प्लीज. फर्स्ट ईयर में कितनी थी? 800,000 आपने जो बाय किया है. ऐसे ईयर 1 में देना है ना. Its resale value will fall by 40% of the purchase price at the end of its first year of operation. So year 1 के एंड पे कितना हो जाएगा? 60% रह जाएगी. ऐसी है. If value falls by 40%, तो remaining value कितनी रह जाएगी? It will be 60%.
So 60% at the end of year 1. Then 25% फिर decrease हो जाएगी, then it will fall by 25%. So remaining value will be 75%. So at the end of year 2 it will be this. आपको year 3 पे चाहिए, again इसको 75% से multiply कर. So 270 is the resale value. तो अभी आपने कितने का खरीदा? 800 का. ईयर 1 पे कितने परसेंट कम हो जाएगा? 60%, 40%, तो 60% बाकी रह गया. ईयर 2 पे और कितना कम हो जाएगा? 25%, तो 75% रह गया. ईयर 3 पे और कितना कम हो जाएगा? 25%. सो रिमेनिंग वैल्यू विल बी 75%. 270. 270 आ तो गया ये जो आप रिजल्ट. परसेंटेज ले रहे हैं ये हमने हर ईयर 800 की तो नहीं ना लेनी, जो अमाउंट ईयर 1 में आई है उसका 75% लिया ना हमने. नहीं, हाँ नहीं, पहले 800 का लेना है 60%, फिर उसका लेना है 75, फिर उसका लेना है 75. ठीक है, नहीं समझ लगी? जी 800 का 75% लिया 480 आ गया, फिर उसका हमने नहीं भाई, 60% लिया तो 480 आ गया, हाँ, और फिर उसका 75% लिया 360, फिर 75% लिया तो 270. तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या है इन सब में से? 270. जी ठीक हो गया सर. मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 20,000 इन द फर्स्ट ईयर. It will increase by 5% in every year. ठीक है. Fuel cost 28,000 in the first year. फिर वो 5,000 से बढ़ जाएगा. $38. बस, और तो कॉस्ट ही खत्म हो गई. कॉस्ट को अगर आप पॉजिटिव में लिख रहे हैं, टैक्स इग्नोर करना है, स्क्रैप वैल्यू को नेगेटिव लिख लें. इफ यू आर राइटिंग कॉस्ट इन अ पॉजिटिव, स्क्रैप वैल्यू शुड बी नेगेटिव. क्या रिपीट करना है ये बताएं? फाइन नहीं है, फ्यूल कॉस्ट है. फ्यूल कॉस्ट नहीं है, फाइन तो नहीं है. नेट कैश फ्लो कैलकुलेट कर लें. फ्यूल कॉस्ट सबको ऐड कर लें. डिस्काउंट फैक्टर इज 8%. डिस्काउंट कर लें. प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. ऐड कर लें, एनपीवी निकालें. मैं वैसे कहूंगा इतनी मेहनत ना करना. सिंपल एनपीवी कैसे आएगी? एनपीवी ब्रैकेट स्टार्ट 8%, 664. एनओडी फैक्टर फाइंड कर लें. अब कैलकुलेटर पे कर लें या इस पे कर लें? 1 minus 1.08 raised to power minus 3.
इक्विवेलेंट कॉस्ट 257.97 आता है। अब 4 ईयर का कर लें। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। 4 ईयर रिप्लेसमेंट क्रैक वैल्यू से भी 75% कम हो जाएगी। इसका और भी 75% ले लें, क्योंकि हर साल कम हो जाती है ना। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा दें और 5%। ये 5 मिनट से और बढ़ जाएगा। नेट कैश फ्लोज आ गए। एनपीवी कैलकुलेट कर लें। एनईडी फैक्टर में अब कितने साल आएंगे? 4 साल आ जाएंगे। 235.17 आ जाएगा। चेक कर लें। सर ये जो इन्होंने बताया हुआ है लास्ट टेस्ट पैराग्राफ कॉस्ट में। भी आएगी। एक हाँ एक जी, एक तो ये हाँ, टेस्ट कॉस्ट भी आनी। टेस्ट कॉस्ट वो नीचे कॉपी पेस्ट कर लें। टेस्ट कॉस्ट क्या कह रहा है जी? 80% chance the test and remedial will cost 50,000 and 20% chance it will cost 120,000. तो कब है जी? ये है कब? At the beginning of 4th year means at the end of 3rd year. So 50 आने के चांस है 80%, 120 आने के चांस है 20%. So tax cost would be 64. ये सर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरह, वो प्रोबेबिलिटी की तरह आपने किया इसको। जी जी जी, प्रोबेबिलिटी करना है, प्रोबेबिलिटी की तरह ये आंसर आ जाएगा बस। दैट्स इट। अब बताएं मुझे कौन सा चूज करेंगे? Which one is better? 3rd year replacement or 4th year replacement? 250 and 257. सर जिसमें कम है वो चूज करेंगे। जिसमें कम है वो बेहतर है। तो यू हैव टू राइट दैट 4 year replacement is the optimum SL replacement period because it has lower equivalent annual cost. ठीक है, लेकिन एक मसला है इस कैलकुलेशन में, एक प्रॉब्लम भी। देयर इज वन प्रॉब्लम विद दिस कैलकुलेशन। मसला क्या है भला? ये लाइन सबसे बड़ा मसला, ये लाइन है। देयर इज 80% चांस that the test cost will be 50,000. अब आपने स्पेस पे सिलेक्ट कर लिया कि 4 ईयर के बाद रिप्लेसमेंट करें, बट स्टिल देयर इज 20% चांस दैट आपकी टेस्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 120,000. इफ दैट हैपन तो 4 ईयर रिप्लेसमेंट आपको महंगी पड़ेगी, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में कि although if we compare 3 year and 4th year, तो 4 year asset replacement cost is lower and it is the optimum
asset replacement period, but there is 20% chance that test cost will be 120,000. In that case, 4-year replacement period is not the suitable option. तो 20% का रिस्क है आपको. ठीक है, बात क्लियर हुई है ये? ओके. Look, we cannot decide the asset replacement based on NPV. Because if we compare the 3-year data with the 4th-year data, 3-year data will always be feasible and it looks like that always replace the asset in 3 years. But if we compare 3-year with a 2-year, then a 2-year answer will be more preferable. So remember, you cannot compare asset replacement based on NPV because NPV does not consider the like with like scenario. 2-year data cannot be comparable with the 3-year data. So what is the best way? Convert the 2-year data into 1 year, convert the 3-year data into 1 year, convert the 4th-year data into 1 year, and then compare that 1 year or annual cost with each other. That's the best way. So you have to write in Word, NPV is a superior method and it consider increase and decrease in the wealth of shareholder. When a company is comparing two projects, company will select the project with the highest NPV. We know that. If two projects have a different useful life, they are continuous in nature, it is unwise to compare 3-year data with the 4th-year data. It is not like the analysis. A company will convert 3-year data and 4-year data into single year and then compare it. अच्छा सर, एक चीज मुझे बता दें, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब इसके 3 पार्ट्स हैं आगे, थ्योरेटिकल बी, सी और डी, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये जैसे 4 मार्क्स का था, आपने इसका ये लिखा है जितना, ये एनफ है, इस सफिशिएंट है, या मतलब हमने ज्यादा लिखना होता है? इसके लिए कितना लिखना होता है? more than enough, more than enough. चलें, ठीक हो गया. ज्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं करना इसको बहुत ज्यादा डिटेल. नहीं ज्यादा एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं. अगर सही एक्सप्लेन किया तो वो ठीक नंबर मिल जाएंगे आपको. बात खत्म. ठीक. अच्छा जी.